Okay. Okay. So this is the question or last question of this exercise 22, where it was by mistake printed as tan hyperbolic of x by 2 is equal to tan hyperbolic of x by 2 is equal to tan hyperbolic of u by 2. That was by mistake printed. So actually it is tan of x by 2 is equal to tan of hyperbolic of u by 2. Then we have to prove that sine hyperbolic of u is equal to tan x, cos hyperbolic of u is equal to sec x, and u is equal to log of tan of pi by 4 plus x by 2. Okay, these three things we need to prove from one single information, that is tan of x by 2 is equal to tan hyperbolic of u by 2. We need to prove that sine hyperbolic of u is tan x, cos hyperbolic of u is sec x, and u is same as log of tan of pi by 4 plus x by 2. Now look, to prove sine hyperbolic of u is equal to tan x, okay, on the basis of this information, tan of x by 2 is equal to tan hyperbolic of u by 2. So what we can do is, at the most we can connect this tan of hyperbolic of u with tan of sine of hyperbolic of u with tan of hyperbolic of u by 2. These two are having some connection. Sine hyperbolic u and tan hyperbolic of u by 2. Okay, these two are having some connection, that is with the hyperbolic identity, and that connection is by hyperbolic identity we know sine hyperbolic of u is 2 tan hyperbolic of u by 2 upon 1 minus tan hyperbolic square of u by 2. That is a half angle hyperbolic formula. Okay, this is the half angle hyperbolic identity, that sine hyperbolic of u is 2 tan hyperbolic of u by 2 upon 1 minus tan hyperbolic square of u by 2. I think this hyperbolic identities has been already briefed to you, how one can generate these hyperbolic identities from the corresponding trigonometric identities. Is it taught to you? Yes? Yes, sir. You all must be knowing how this hyperbolic formulas can be generated from the corresponding trigonometric formulas. The key is you have to replace the angle. Okay, the key is you have to replace the angle by I times of the angle. If the angle is x, you have to replace it by I times x. If the angle is theta, you have to replace it by I times theta, and so on. And then once you replace that angle by I times of the angle, then we have to use a relation between trigonometric function and hyperbolic function. And using that relation between trigonometric function and hyperbolic function, one can get easily the hyperbolic identities from the corresponding trigonometric identities. Like in trigonometric, we have square identities like sine square theta plus cos square theta is 1. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. So correspondingly, we can get in hyperbolic also. What we have to do? In the trigonometric identity, sine square theta plus cos square theta is equal to 1. You have to replace theta by I times of theta. Simple. आपको बस थीटा को रिप्लेस करना है I times of theta से, and then you have to use a relation between trigonometric and hyperbolic like sine of I theta. Okay, so what was that relation? It was like sine of I theta is equal to I times sine hyperbolic of theta. This is the one relation. Then cos of I theta is equal to cos hyperbolic of theta, and so on. So like that we have 6 relations which converts trigonometric function into hyperbolic function. तो ऐसे relations का use करके हम ये identities generate करते हैं. Okay, so even at the time of examination, if you are not able to recollect what is the identity for sine hyperbolic of u in terms of tan hyperbolic of u by 2, doesn't matter. What you have to do, we have to write the corresponding trigonometric identity. Can anybody tell me what is the corresponding trigonometric half angle formula for sine u in terms of tan u by 2? Anybody? Or sine theta in terms of tan theta? किसी को याद है?
what is a trigonometric formula for sin theta in terms of tan theta? Yes, anyone? 1 minus tan square theta by 2 upon 1 plus tan No, square theta by no. That is for cos theta. I'm talking about sin theta. 2 tan theta upon 2. Sir, 2 tan theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2. Yes, it is 2 tan theta by 2. सबसे पहले तो अगर sin का एंगल थीटा है तो tan का एंगल थीटा by 2 बनेगा, एंगल हाफ बन जाएगा सबसे पहले वो चीज. Secondly, it is 2 tan theta divided by 1 plus 2 tan square of theta by 2, right? This is my trigonometric formula of sin theta in terms of tan, correct? तो इसमें आपको क्या करना है, थीटा को रिप्लेस करना है i टाइम्स ऑफ थीटा से. When you replace theta by i times of theta, you have to use this kind of relations, and then on using these relations, you know that tan gets converted into tan hyperbolic, sin gets converted into sin hyperbolic, and because of that, tan of I theta is I times sin hyperbolic theta. I square becomes minus, तो ये जो plus है ना, ये change होके minus बन जाए. That is the reason. So basically, this is the key where we replace angle by I times of angle. Okay, so this is my half angle hyperbolic formula for sine hyperbolic of u in terms of tan hyperbolic. Okay, now by the data, tan hyperbolic of u by 2 is given as tan of x by 2. So according to data, I am just putting tan hyperbolic of u by 2 is tan of x by 2. So I'll get 2 tan of x by 2 divided by 1 minus tan square of x by 2. Now again, what is 2 tan of x by 2 upon 1 minus tan square of x by 2? This is 1 plus tan. Okay, so yes, ये 2 नहीं होता है ना, यहाँ पे 1 plus tan square होता है ना, isn't it? There is no 2 ना, it is 1 plus. So what is 2 tan of x by 2 tan of theta by 2 upon 1 minus tan square theta by 2? It is formula for what? If 2 tan theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2 is sin theta, what is 2 tan theta by 2 upon 1 minus tan square theta by 2? Anybody? Cos theta. No. Tan theta. Cos theta is what? Cos theta is 1 minus tan square theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2. That is cos theta. 1 minus tan square theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2. That is cos theta. तो इसका और cos theta का रेशियो अगर हम लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, tan theta मिलेगा, 2 tan theta by 2 upon 1 minus tan square theta by 2. तो this 2 tan x by 2 upon 1 minus tan square x by 2, that becomes tan x, again by half angle trigonometric formula. So thus we have managed to show that sin hyperbolic u is equal to tan u. Done. In fact, out of this three results, the very first result, sin hyperbolic of u is equal to tan u, that is itself important to prove. This result is itself very important. यही result prove करने के लिए important है. Once you prove this result, rest of the two results are automatically obtained. Okay. Is this understood, everybody? How sin hyperbolic of u is proved as tan of x? Yes, sir. Okay, actually here there is a lot of confusion. A lot of confusion can be created because on one side we have a hyperbolic function and on another side we have a trigonometric function. So we have to show the equality of hyperbolic function and the trigonometric function. Hyperbolic और trigonometric का हमको यहाँ पे equality बताना है. Hyperbolic और trigonometric का हमको यहाँ पे equality बताना है, right? But angles are different, and that we could manage to prove with the help of this information. Now, once you have proved that sin hyperbolic of u is equal to tan x, don't you think so? One can easily prove for cos hyperbolic u. Is there any connection between sin hyperbolic u and cos hyperbolic u? Is there any connection between sin hyperbolic u and cos hyperbolic u? What is that square hyperbolic identity? Anybody? What is that square hyperbolic identity? No? Does sin hyperbolic square plus cos hyperbolic square is equal to 1? Yes, sir. Sin hyperbolic square plus cos hyperbolic square is equal to 1. Are you sure? No, sir.
No. No, sir. Sine hyperbolic square plus cos hyperbolic square is not equal to 1. Then what? What is that square? First square. Sir, minus. The cos hyperbolic. Sir, cos cos hyperbolic square minus hyperbolic sin minus sin hyperbolic. square. Right. Cos hyperbolic square minus sine hyperbolic square is equal to 1. That is identity. Okay. Cos hyperbolic square minus sine hyperbolic square is equal to 1. That is identity. One can use that. One can use that identity to prove this particular result. Or one can also use this kind of trigonometrical formula. One can also use this kind of half angle hyperbolic formula. तो जैसे अभी आपने sin hyperbolic u के लिए half angle hyperbolic formula लिखा है, तो can somebody tell me what is the corresponding half angle hyperbolic formula for cos hyperbolic u? अगर sin hyperbolic u ये है 2 tan hyperbolic of u by 2 upon 1 minus tan hyperbolic square of u by 2, what could be cos hyperbolic of u? Anybody? So 1 minus tan square h by h into u by 2 upon 1 plus tan square. That is for trigonometric. I am talking about hyperbolic. तुम जो बोल रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए, हाइपरबोलिक में उसका उल्टा होगा. हाइपरबोलिक में क्या होगा? 1 plus tan hyperbolic square upon 1 minus tan hyperbolic square. This is what is written exactly. Now to prove cos hyperbolic of u is sec x, by hyperbolic identity we have cos hyperbolic of u is equal to 1 plus tan hyperbolic square of u by 2 upon 1 minus tan hyperbolic square of u by 2 by half angle hyperbolic formula. Now ये कहां से आया? ये इस trigonometric formula से आया. What is cos theta? अभी जो तुमने बोला मुझे 1 minus tan square theta by 2 upon 1 plus upon 1 plus tan square theta by 2. So 1 minus tan square theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2, that is cos theta. तो इसमें रिप्लेस करो थीटा को I टाइम्स ऑफ थीटा से, तो ये cos हो जाएगा cos hyperbolic, tan हो जाएगा tan hyperbolic, and because of that tan of I theta is I times tan hyperbolic, तो I square becomes minus, तो ये minus becomes plus, and this plus will become minus, and we get accordingly this relation. Is it clear? Is it understood? तो बेसिकली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करके उस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में whatever is your angle, that you have to replace by I times of the angle, and then you have to use a relation between hyperbolic and trigonometric function. You will automatically get this result. Okay. Now in this result, according to data, tan hyperbolic of u by 2 is tan x by 2. That is my given data. That I am substituting. So I'll get 1 plus tan square x by 2 upon 1 minus tan square x by 2, and that is exactly 1 plus tan square x by 2 upon 1 minus tan square x by 2. That is exactly reciprocal of this formula, right? So it is a reciprocal of this particular formula, means it is a reciprocal of cos x. That means it is sec x. Okay, so one can also prove easily cos hyperbolic of u is equal to sec x. And there is another alternative option which I told just now, ये कि cos hyperbolic square minus sin hyperbolic square ये 1 होता है. Cos hyperbolic square minus sin hyperbolic square ये 1 होता है. इसका मतलब cos hyperbolic square क्या बन जाएगा? 1 plus sin hyperbolic square. But according to result 1, हमने just क्या prove किया? What we have proved just now? Sin hyperbolic of u is equal to what we have proved just now? Sin hyperbolic of u is equal to tan x. ये हमने प्रूव किया, बराबर है. So we have proved it is as tan x. So it is 1 plus tan square x, and that is sec square x. So cos hyperbolic square u is equal to sec square x, मतलब cos hyperbolic u is equal to sec x. So see, this is another way of proving this second result. कितना simple है. मतलब the moment I prove the first result, with the help of this cos hyperbolic square minus sin hyperbolic square, I can easily get my second result. तो second result मैं ऐसे भी prove कर सकता हूँ. Okay, otherwise मैं ऐसे भी prove कर सकता हूँ. I have two options. So this is the speciality of hyperbolic functions. One can prove
one can, discuss the problem, one can solve the problem of hyperbolic function in more than one way. Sometimes we can prove the problem of hyperbolic function in more than one way. That is what exactly happening in this example. Is it understood? Hello, is it understood? Yes, sir. Okay. And now the third result which we wanted to prove was u is equal to log of tan of pi by 4 plus x by 2. ये भी मुझे प्रूव करना था, करेक्ट? अभी अगर मुझे प्रूव करना है u is equal to log of tan of pi by 4 plus x by 2, किस बेसिस पे मुझे ये प्रूव करना है? इस बेसिस पे प्रूव करना है tan hyperbolic of x by 2 is equal to tan hyperbolic of u by 2. इस बेसिस पे मुझे ये प्रूव करना है u is equal to log of tan of pi by 4 plus x by 2. इस बेसिस पे मुझे ये प्रूव करना है. अभी गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, Yes, sir. okay, so to prove this result, once we have proved the first and second result, instead of using this hypothesis, that is tan of x by 2 is equal to tan hyperbolic of u by 2, I can also make use of this first result or second result to prove the third result. Okay, मैं क्यों नहीं यूज कर सकता पहला और दूसरा रिजल्ट? मैं फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट भी यूज कर सकता हूँ. Okay, how does it strikes that we can use first result or we can use second result to prove the third result? Because third result talks about u is equal to log of tan of pi by 4 plus x by 2. इसका मतलब इस log को अगर मैं शिफ्ट करता हूँ right to left, तो what we get? If I shift this log from right to left, what we get? E raised to u, right? So it means it is enough to prove e raised to u is equal to tan of pi by 4 plus x by 2. And e raised to u is an integral part of this definition of sin hyperbolic of u and cos hyperbolic of u. E raised to u कहाँ पे आएगा? sin hu के definition में आएगा, cos hu के भी definition में आएगा. That means third result is more easy to prove with the help of first result or second result instead of given hypothesis. दिए हुए hypothesis के comparison में third result ज्यादा आसान है prove करना using the first result or second result. That is what exactly I am doing. So to prove that u is equal to log of tan of pi by 4 plus x by 2, that means to prove that e raised to u is equal to tan of pi by 4 plus x by 2. Do you know what is tan of pi by 4 plus x by 2? Tan a plus b formula. What is tan a plus b formula? Tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. मतलब tan pi by 4 plus tan x by 2 upon 1 minus tan pi by 4 into tan x by 2. But tan pi by 4 is 1, means we get 1 plus tan x by 2 upon 1 minus tan x by 2. It means to prove this result, enough to prove e raised to u is equal to 1 plus tan of x by 2 upon 1 minus tan of x by 2. That's it. It means it is enough to prove 1 plus tan of x by 2 upon 1 minus tan of x by 2. बस इतना ही प्रूव करना. Yes, no? Yes, sir. Okay, so look how one can prove this. Well, I am taking the help of first result. My first result says sin hyperbolic of u is equal to tan x. पहला रिजल्ट मैंने क्या प्रूव किया था? sin hyperbolic of u is equal to tan x. ये मैंने प्रूव किया था. तो मैं इसी का हेल्प लूंगा. I'll take the help of this only. What is sin hyperbolic of u according to definition? ये होता है e raised to u minus e raised to minus u divided by 2 is equal to tan x. That means e raised to u minus, अभी e raised to minus u को मैंने लिखा 1 upon e raised to u is equal to 2 को shift किया तो becomes 2 tan x. Then I cross multiply, I'll get e raised to u the whole square minus 1 is equal to 2 tan x e raised to u. तो ये 2 tan x e raised to u को मैंने shift किया right to left तो मुझे मिला e raised to u the whole square minus 2 tan x times e raised to u minus 1 equal to 0, which looks like a quadratic equation in e raised to u. Isn't it? Isn't it? तो कोई भी डेफिनेशन हो, साइन हाइपरबोलिक का हो, कॉस हाइपरबोलिक का हो, टैन हाइपरबोलिक हो, कॉट हाइपरबोलिक हो, सेक हाइपरबोलिक हो, कोसेक हाइपरबोलिक हो, कोई भी डेफिनेशन, कोई भी हाइपरबोलिक फंक्शन
अगर किसी चीज से इक्वेट किया है, कोई भी हाइपरबोलिक फंक्शन, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, टैन हाइपरबोलिक, कॉट हाइपरबोलिक, सेक हाइपरबोलिक और कोसेक हाइपरबोलिक, whenever it is equated with something, whether it is a number or whether it is a variable or whether it is a function or whether it is an expression, whenever any hyperbolic function is equated with something, that will always gives me a quadratic equation. वो हमेशा मुझे क्या देगा, quadratic equation देगा. तो देखो इसको मैंने सिंप्लीफाई करके मुझे मिला quadratic equation in e raised to u, and therefore by quadratic root formula my a becomes 1, my b becomes minus 2 tan x, and my c becomes minus 1. So by quadratic root formula, minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a, what I'll get? Minus of b is minus 2 tan x plus minus under root of b square, matlab minus 2 tan x ka square, that is 4 tan square x, minus 4ac. A is 1, c is minus 1. The whole thing is divided by 2a, that is 2 into 1. So we'll get 2 tan x plus minus 4 tan square x plus 4 divided by 2. Okay, that means e raised to u is equal to 2 tan x plus minus, इसमें से 4 कॉमन लिया, under root of 4 is 2, tan square x plus 1 remains. That 2 get cancelled with the denominator 2. Tan square x plus 1 is sec square x, under root of that is sec x, means we get ultimately e raised to u is equal to tan x plus or minus sec x. That means sin by cos x plus or minus 1 by cos x. मतलब मुझे e raised to u के दो वैल्यूज मिले. Why I am getting two values of e raised to u? Anybody? किसी को पता है e raised to u के मुझे दो वैल्यूज क्यों मिले? Because it has two roots. Because प्लस माइनस दोनों है. because दो रूट है. हाँ, because ये दो रूट है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे e raised to u, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे e raised to u. जस्ट अ मिनट. Fine. So since it was giving me a quadratic equation in e raised to u, and that was having maximum two roots, that's why I'm getting two values. That is the reason I'm getting two values of e raised to u. अभी ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए मुझे तो एक ही वैल्यू चाहिए ना u का, मुझे दो वैल्यू नहीं चाहिए. तो इन दोनों में से मुझे एक वैल्यू कंसीडर करके आगे बढ़ना होगा. तो what I considered without loss of generality is sin by cos x plus 1 by cos x. मैंने प्लस साइन कंसीडर करके कन्वेंशन से कंसीडर किया. बाय कन्वेंशन आई अज्यूम सपोज e raised to u is sin by cos x plus 1 by cos x, मतलब 1 plus sin x by cos x. ओके, 1 plus sin x by cos x. तो अभी इसको मुझे प्रूव करना है 1 plus tan x by 2 upon 1 minus sin x by 2, मतलब आई वांट हाफ एंगल. यहाँ पे sin x और cos x का एंगल x है, बट रिजल्ट में मुझे x by 2 चाहिए. इसका मतलब मुझे हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. तो व्हाट इज द हाफ एंगल फॉर्मूला फॉर cos x? हाफ एंगल फॉर्मूला फॉर cos x. cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है? एनीबॉडी? Cos square x by 2 minus sin square x by 2. cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है cos square x by 2 माइनस sin square x by 2. बस इतना ही. 2 cos square x. हाँ, 2 cos square x by 2 minus 1. 1 minus 2. 1 minus 2 sin square x by 2. Fine. 1 minus 2 sin square
x by और एक होता है one more is 1 minus tan upon 1. हाँ cos x is equal to 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. तो हाफ एंगल फॉर्मूला cos x के तो ये चार ऑप्शन मेरे पास है, ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है. तो why I have preferred only this option cos square x by 2 minus sin square x by 2. I could have used this option also because जो रिजल्ट मुझे प्रूव करना है उसमें तो मुझे 1 minus tan x by 2 1 plus tan x by 2 ही चाहिए और ये तो मुझे डायरेक्टली इस हाफ एंगल फॉर्मूला से मिल सकता था, बराबर है ना. Why I have not used that? Anybody? पता है मैंने वो क्यों यूज नहीं किया? Why I have preferred this one? तो क्योंकि न्यूमरेटर में उसका कॉन्जुगेट है तो कैन क्योंकि न्यूमरेटर में बिकॉज मुझे सिर्फ cos x को सॉल्व नहीं करना आई वांटेड टू सॉल्व 1 plus sin x also. So न्यूमरेटर में sin x is also there, correct? In numerator we have a sin x, correct? And that is and we don't have only sin x in the numerator, otherwise I could have thought of this option also. I could have thought of this option also अगर न्यूमरेटर में सिर्फ sin x होता, but न्यूमरेटर में 1 plus sin x. Since numerator में 1 plus sin x है, so therefore sin x can be treated as 2 sin x by 2 cos x by 2 and 1 can be treated as sin square x by 2 plus cos square x by 2. तो 1 plus sin x क्या बन जाएगा पता है? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा cos x by 2 plus sin x by 2. बराबर है ना? 1 plus sin x बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर. देखो इसको ओपन करो, cos x by 2 plus sin x by 2 the whole square करो, क्या मिलेगा? cos square x by 2 plus sin square x by 2 that is 1 plus 2 times cos x by 2 sin x by 2 that is sin x. We'll have 1 plus sin x. So it is a perfect square of cos x by 2 plus sin x by 2. Since numerator is getting cos x by 2 and sin x by 2, that's the reason this formula is not recommended. This formula is recommended. That's the reason मैंने ये पर्टिकुलर फॉर्मूला जाके अप्लाई किया. अदरवाइज मेरे पास cos x के लिए तो चार ऑप्शन थे. हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करने के लिए मेरे पास cos x के चार ऑप्शन थे, बट आई प्रेफर दिस वन. इट इज बिकॉज ऑफ दैट न्यूमरेटर. ये किसकी वजह से किया मैंने? न्यूमरेटर की वजह से. आई डिड दिस बिकॉज ऑफ न्यूमरेटर. फाइन. सो फर्दर this cos x by 2 plus sin x by 2 the whole square, and then denominator जो था cos square x by 2 minus sin square x by 2, that can be factorized as cos x by 2 minus sin x by 2 into cos x by 2 plus sin x by 2, okay, into cos x by 2 plus sin x by 2. So cos x by 2 plus sin x by 2 एक factor cancel हो जाएगा, so ultimately we end up with cos x by 2 plus sin x by 2 upon cos x by 2 minus sin x by 2, divide throughout by cos x by 2. So you will get 1 plus tan x by 2 upon 1 minus tan x by 2. This is what exactly we wanted to do. Okay, this is what we exactly wanted to do. So u equal to log of tan of pi by 4 plus x by 2 प्रूव करना मतलब e raised to u को tan of pi by 4 plus x by 2 प्रूव करना मतलब 1 plus tan x by 2 upon 1 minus tan x by 2 प्रूव करना. That is the reason. So look किस पे बेसिस पे मैंने इसको प्रूव किया? I have not proved this on the basis of the given hypothesis. I have proved this on the basis of first result. Sin hyperbolic of u is equal to tan x. Okay. Somebody can use second result also. You may use second result also. Cos hyperbolic of u is equal to sec x. वो भी आप यहाँ पे use कर सकते हो. तो cos hyperbolic of u करोगे तो e raised to u plus e raised to minus u by 2 आएगा और फिर यहाँ पे sec x आएगा और फिर वो भी तुमको quadratic equation देगा. वो भी तुमको e raised to u के दो वैल्यूज देगा और उसमें से एक वैल्यूज लेके आपको आगे बढ़ना है. Is it clear, everybody? Is this clear? Hello? Is it understood? So this is how one can handle this last example of exercise 72. Fine. Now we'll move towards the inverse hyperbolic function. So this is all about hyperbolic function. Now we'll go towards the inverse hyperbolic function. Now, inverse hyperbolic function hota kya hai? What is the inverse hyperbolic function? If x is your sine hyperbolic of y,
then y will become sin hyperbolic inverse of x. देखो यहाँ पे दिया है, अगर x आपका sin hyperbolic of y है तो y आपका बन जाएगा sin hyperbolic inverse of x. That is defined as a inverse hyperbolic function of x, where again x can be real number or x can be complex number, and one can define sin hyperbolic, cos hyperbolic, tan hyperbolic, cot hyperbolic, sec hyperbolic, and cosec hyperbolic. As far as our curriculum is concerned, we have only 3 inverse hyperbolic functions. One is sin hyperbolic inverse x, second is cos hyperbolic inverse x, and third is tan hyperbolic inverse x. We are not going to study what is cot hyperbolic inverse, what is sec hyperbolic inverse, and what is cosec hyperbolic inverse. First of all, let me clear one thing. Many people have a misinterpretation that sin hyperbolic inverse of x means it is 1 upon sin hyperbolic of x. No. First of all, understand this sin hyperbolic inverse of x is not 1 upon sin hyperbolic of x. काफी लोगों को तो यही लगता है, यही होता है. Okay, because usually हम x इनवर्स होता है तो हम रेसिप्रोकल करते हैं ना. यूजुअली ये होगा एक्सपोनेंशियल के केस. एक्सपोनेंशियल का जब इनवर्स होता है तो हम उसको रेसिप्रोकेट करते हैं. ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक के केस में जैसे x इनवर्स हो गया मतलब वो 1/x हो गया, log द होल इनवर्स हो गया मतलब 1/x हो गया, e raised to x द होल इनवर्स हो गया मतलब 1/e raised to x हो गया. बट दैट डजंट एप्लीकेबल फॉर ट्रिग्नोमेट्री. Sin hyperbolic inverse of x means it is a inverse of sin hyperbolic of x. That doesn't mean it is 1 upon sin hyperbolic. So this is inverse function and this is reciprocal function. Both are different. Okay, but बाकी function के लिए ये true होता है. जैसे कि x inverse अगर है तो इसको आप लिख सकते हो 1/x. बराबर है. Log x the whole inverse अगर है इसको आप लिख सकते हो 1 divided by log x. Can you write like this? 1 divided by log x. Fine. E raised to x the whole inverse. This you can write as e raised to minus x, and that is nothing but 1 divided by e raised to. ये फंक्शन के बारे में तो आप लिख सकते हो, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आप ऐसा लिख नहीं सकते हो. हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए आप ऐसा लिख नहीं सकते हो. So for an inverse hyperbolic, they have the specific definition. Now, what is the definition? Sin hyperbolic inverse of x is defined as log of x plus root of x square plus 1. Look, sin hyperbolic inverse of x is defined as log of x plus root of x square plus 1. Does this remind you something? Have you ever come across integration this? में. हाँ, very good. This log of x plus under root of x square plus 1, ये आपका किसी स्टैंडर्ड फंक्शन के इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में आता था, अगर आपको याद है. If you Yes, sir. remember, Yes, sir. this comes in one of the standard integration formula. Okay, can somebody recall that integration formula जिसमें ये पार्ट आता है log? किसी को याद है? Integration of what gives you? Integration of which formula gives me this as a one of the term? Anybody remembers? It is integration of square root of x square plus 1. Integration of 1 upon under root of x square plus 1 था. 1 upon Under root of x square plus 1. And what is integration of square root of x square plus 1? सर वो x by 2 under root of x square plus a square plus. बट उसके सेकेंड पार्ट में भी आता है ना ये टर्म. हाँ सर सेकंड पार्ट में भी है सेकेंड वो. पार्ट में उसके ये टर्म आता है, राइट? वो 1 a square by 2 times में. So this is a straightforward answer for what you said, that is 1 upon integration of 1 upon under root of x square plus 1. तो ये जो है ये एक्चुअली फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon under root of x square plus 1 का. ये एक्चुअल फॉर्मूला है, and this is one of the term in the integration of
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्मूला में ये सेकेंड पार्ट आता है. ओके, और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के 1 का ये फॉर्मूला ही है खुद, log of x plus root of x square plus 1. करेक्ट. तो this we have already seen, मतलब you have unknowingly you were aware about this function, but सिर्फ आपको फंक्शन नहीं पता था कि वो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन था, राइट. तो आपको ऑलरेडी ये फंक्शन पता था, बट you was not knowing the other nomenclature of that function. That is nothing but sin hyperbolic inverse of x. Similarly, log of x plus under root of x square minus 1, ये किसका फॉर्मूला है पता है? सर 1 upon under root of x square minus 1. माइनस 1 का फॉर्मूला है, बराबर है. इट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x square minus 1 का फॉर्मूला है, और इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x square minus 1 के फॉर्मूला का ये दूसरा पार्ट है. फाइन. सो again we were aware about this function unknowingly, but that was same as cos hyperbolic inverse of x. So sin hyperbolic inverse of x is log of x plus root of x square plus 1. Cos hyperbolic inverse of x is log of x plus root of x square minus 1. And look, what is tan hyperbolic inverse of x? It is 1 by 2 log of 1 plus x upon 1 minus x. ठीक है. अभी ये फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ? कहाँ से जनरेट हुआ? From where it has come? Let me derive this formula. तो देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है. अगर मुझे प्रूव करना है कि sin hyperbolic inverse of x is log of x plus root of x square plus 1. Suppose this I wanted to prove. तो ये प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं. One of the option of proving this is definition. आप इसको hyperbolic function में कन्वर्ट करो, ओके, और फिर वो hyperbolic function का definition यूज करो. तो look what I did. I assume let sin hyperbolic inverse of x is y. I assume let sin hyperbolic inverse of x is y. तो x क्या बन जाएगा? If sin hyperbolic inverse of x is y, what is x becomes? Sin hyperbolic of y. Hyperbolic of y. Yes, तो x बन जाएगा sin hyperbolic of y. अभी sin hyperbolic का अगर आप definition use करते हो, e raised to y minus e raised to minus y upon 2 is equal to x बन जाएगा. मैंने क्या बोला था? Whenever your hyperbolic function is equal to something, that will gives you a quadratic equation. फिर वो आपको quadratic equation देगा in e raised to u, and by solving that quadratic equation in e raised to u, you can able to prove this result. But I don't prefer that option. मैं sin hyperbolic को definition में लिखना prefer नहीं करता हूँ. मैंने क्या किया देखो. From this sin hyperbolic inverse of x is equal to y, I wrote x as sin hyperbolic of y. If I wrote x as sin hyperbolic of y, then I calculated x plus root of x square plus 1. Tell me why I calculated this thing, x plus root of x square plus 1. ये मैंने क्यों कैलकुलेट किया? अगर मुझे x पता चला कि sin hyperbolic of y है, if I know if my x is sin hyperbolic of y, what is the reason behind to calculate the expression x plus under root of x square plus 1? Q. Why only this expression I calculated? At the right hand side. Very good. Because it is involved in my right hand side. ये expression मेरे right hand side में involved है, right? मतलब when you assume inverse hyperbolic function on left hand side is equal to some variable, जिससे आपको hyperbolic function मिलता है, तो whatever is a expression of involved in the right hand side, you have to simply calculate that expression. That's it. तो मैंने क्या किया? x is equal to sin hyperbolic of y से मैंने x plus root of x square plus 1 कैलकुलेट किया, तो मुझे मिला sin hyperbolic of y plus under root of sin hyperbolic square of y plus 1. That is sin hyperbolic of y plus sin hyperbolic square of y plus 1 is nothing but cos hyperbolic square of y. Under root of that gives me cos hyperbolic of y. So I get sin hyperbolic of y plus cos hyperbolic of y. And whenever we add two hyperbolic functions or whenever we subtract two hyperbolic function, we end up with the exponential function. That is what happening. मैंने sin hyperbolic u y का definition plus cos hyperbolic y का definition लिखा, e raised to y minus e raised to minus y by 2 plus e raised to y plus e raised to minus y by 2. एडिशन किया तो e raised to minus y कैंसिल हो गया,
and I'll get 2 e raised to y divided by 2, that is e raised to y. So x plus root of x square plus 1 आ गया e raised to y. That means what is log of x plus root of x square plus 1? That is y. But by equation 1, what was the assumption for y? Sine hyperbolic inverse of x. मतलब मैंने LHS को y assume किया और मैंने RHS भी प्रूव किया is same as that y. Okay? मैंने LHS को assume किया y और मैंने RHS को भी y प्रूव किया. So if I assume LHS as y and if I manage to show my RHS is also y, what does it mean? LHS is same as RHS. Finished. So simple proof. तो यहाँ पे मैंने वो quadratic equation generate नहीं किया. I could have generated the quadratic equation by writing the definition of sine hyperbolic of y at this point. इस स्टेज पे मैं वो डेफिनेशन लिख के हाइपरबोलिक क्वाड्रेटिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकता था, but I don't prefer that option. This is called as a method of substitution, and this method of substitution or method of assumption you can say, this will work to prove the remaining two definitions also. यही मेथड हम अप्लाई करेंगे cos hyperbolic of x को प्रूव करने के लिए, tan hyperbolic of x को प्रूव करने के लिए, and these are the only three inverse hyperbolic functions that we need to discuss in this exercise. Is it understood? Yes, sir. In fact, this technique is most convenient technique for solving examples on inverse hyperbolic functions as well. Inverse hyperbolic के example solve करने के लिए ये technique कभी-कभी हम use करते हैं. Let us take an example. Suppose मुझे प्रूव करना है tan hyperbolic inverse of x is sin hyperbolic inverse of x upon the root of 1 minus x square. तो देखो ये जो सेम टेक्निक है जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, जो टेक्निक मैंने sin hyperbolic inverse of x को प्रूव करने के लिए लगाया, the same technique I can apply for this question. Look what I did. दिखने में तो कितना complicated question दिखता है. मैंने किया assume let tan hyperbolic inverse of x is y. मैंने assume किया suppose tan hyperbolic of inverse of x is y. That means x becomes what? Tan hyperbolic y. Okay, so x becomes tan hyperbolic y. And then what is the expression of x present on the right hand side? X divided by root of 1 minus x square. Therefore, I calculated x divided by root of 1 minus x square. What is x divided by root of 1 minus x square? It is tan hyperbolic y divided by 1 minus tan hyperbolic square of y. That is tan hyperbolic y divided by 1 minus tan hyperbolic square is sec hyperbolic square. So we get tan hyperbolic y upon sec hyperbolic y. It means sin hyperbolic y upon cos hyperbolic y divided by 1 upon cos hyperbolic y. So cos hyperbolic y cancel, we will get sin hyperbolic of y. So x upon root of 1 minus x square is sin hyperbolic of y. That means ये sin hyperbolic को shift करो right to left, तो आपको क्या मिलेगा? Sin hyperbolic inverse of x upon root of 1 minus x square is y. So I assume LHS is y. And I managed to prove RHS is also y. Okay, but by equation 1 that was same as tan inverse x. That means RHS is same as LHS. Look how simple it is. Okay. Yes, sir. Have I applied a definition of inverse hyperbolic function anywhere? I was having these definitions in my hand. मेरे पास sin hyperbolic inverse का definition था, मेरे पास tan hyperbolic inverse का definition था, but मैंने use ही नहीं किया. Okay, I do not require that definition at all. Okay, in fact, अगर आप definition use करते हैं ना, तो imagine sin hyperbolic inverse का definition for which angle? X divided by root of 1 minus x square. Sin hyperbolic inverse of x होता है log of x plus root of x square plus 1. तो imagine x की जगह पे अगर होगा x divided by root of 1 minus x square, तो पता है sin hyperbolic inverse of x का definition क्या हो जाएगा? Log of x divided by root of 1 minus x square plus
स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता था। And that we have to prove it as tan hyperbolic inverse of x, मतलब half log of 1 plus x upon 1 minus x। तो truly speaking definition से ये result prove करना is too complicated। definition से definition of hyperbolic function use करके ये result prove कर सकते हैं, but that is complicated। Look, the simple option is the method of assumption. Assume LHS is y, and I managed to prove RHS is also y. Done, true. Okay, but this doesn't work for every exam. Okay, this doesn't work for every question. Like, I hope you understood this first question. How tan hyperbolic inverse of x is proved as sin hyperbolic inverse of x upon root of 1 minus x square. Is it understood, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, अभी sir. अभी देखते हैं कि क्या ये लॉजिक वर्क होगा सेकंड क्वेश्चन के लिए। क्या ये लॉजिक वर्कआउट होगा सेकंड क्वेश्चन के लिए? व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन? sec hyperbolic inverse of sin theta is log of cot of theta by 2. Sec hyperbolic inverse of sin theta, we have to prove it as log of cot of theta by 2. क्या लगता है आपको? सिमिलर फैशन में अगर मैं अज्यूम करके चलता हूँ sec hyperbolic inverse of sin theta को y, ओके, अगर मैं अज्यूम करके चलता हूँ sec hyperbolic inverse, अगर मैं अज्यूम करके चलता हूँ sec hyperbolic inverse of sin theta is y, okay, am I managed to prove my right hand side is also y? Do you think so? Do you think so? Yes, no? पॉसिबल है? तुमको ऐसा लगता है कि अगर मैं LHS को y अज्यूम करता हूँ तो क्या मैं उससे RHS प्रूव कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, जैसे कि मैंने साइन हाइपरबोलिक x के डेरिवेशन में किया। ओके, साइन हाइपरबोलिक के डेफिनेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड में इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन था, राइट हैंड साइड में लॉगरिथमिक फंक्शन था। आई कुड मैनेज। यहाँ पे भी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है, और राइट हैंड साइड में क्या है? व्हाट इज देयर ऑन द राइट हैंड साइड? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो डोंट यू थिंक सो इट इज एज गुड एज सेम एज जैसे हमने डेरिवेशन किया साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में इनवर्स हाइपरबोलिक था, राइट हैंड साइड में लॉगरिथमिक था। तो व्हाई द सेम लॉजिक विल वर्क फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो? यहाँ पे दोनों तरफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस थे, फिर भी मैंने सेम लॉजिक अप्लाई किया। ओके, तो हियर आल्सो द सेम मेथड विल वर्क। Assuming sec hyperbolic inverse of sin theta is y, that will work for this question also. Okay, but ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। पता है क्यों? पता है क्यों ट्रिकी हो जाएगा? Because जैसे आप अज्यूम करोगे sec hyperbolic inverse of sin theta is y, आपका sin theta क्या बनेगा? आपका sin theta क्या बनेगा? sec sec hyperbolic of hyperbolic y. हाँ, Hyperbolic sec y. of hyperbolic of y, आपका sin theta बनेगा sec of hyperbolic of y। अभी इस इंफॉर्मेशन से log of cot of theta by 2 ये प्रूव करना तो डिफिकल्टी है ना। इस इंफॉर्मेशन से log of cot of theta by 2, तो इसके लिए जैसे देखो इस केस में tan hyperbolic inverse of x is y, तो x will become tan hyperbolic of y, और फिर हमने देखा कि राइट हैंड साइड में x का कौन सा एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है, वो एक्सप्रेशन मैंने कैलकुलेट किया। सेम चीज मुझे यहाँ पे करना है। sec hyperbolic inverse of sin theta is y, that means sin theta is sec hyperbolic of y। मतलब मुझे चेक करना है कि राइट हैंड साइड में sin theta का कौन सा एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है। Does right hand side is containing expression of sin theta? Does right hand side is containing expression of sin theta? क्या राइट हैंड साइड में sin theta का कोई एक्सप्रेशन है? नहीं ना। राइट हैंड साइड में किसका एक्सप्रेशन है? cot theta by 2 का एक्सप्रेशन है। Can you able to connect sin theta with cot theta by 2? क्या आप sin theta को cot theta by 2 से कनेक्ट कर सकते हो? क्या लगता है आपको? cot theta by 2 को क्या हम sin theta से कनेक्ट कर सकते हैं? Do you think so? Yes.
What do you mean by cot theta by 2? cos theta by 2 upon sin theta by 2. Cos theta by 2 upon sin theta by 2, बराबर है? तो cot theta by 2 होता है cot theta by 2, cot theta by 2 is same as cos theta by 2 upon sin theta by 2. तो does cos theta by 2 upon sin theta by 2 is anyhow linked with sin theta? ऐसा लगता है तुमको? सबसे पहले तो एंगल हाफ एंगल है, हाँ? sin theta का हाफ एंगल sin फॉर्मूला theta क्या by होता 2 है? will be 2 sin theta cos. This is nothing but cos theta by 2 upon sin theta by 2, बराबर है कि नहीं? अभी मुझे बताओ, क्या sin थीटा का इससे कुछ लेना देना है? कुछ कनेक्शन है sin थीटा और इसका, है ना? 2 sin theta cos हाँ, theta. हाफ एंगल फॉर्मूला sin थीटा इज नथिंग बट 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2. तो डेफिनेटली देयर इज अ कनेक्शन. ओके, मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि राइट हैंड साइड में cot थीटा by 2 को जनरेट करना sin थीटा से. पॉसिबल है, sin थीटा से cot थीटा by 2 जनरेट करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. हाँ, बट इट इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था. फर्स्ट क्वेश्चन तो हमको पता ही नहीं चला कि हम कब साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर पे आ गए. ओके, हम कब राइट हैंड साइड पे आ गए हमको पता ही नहीं चला. हमने तो स्टार्ट एलएचएस से किया था, बट कब हमको जाके राइट हैंड साइड मिला हमको पता ही नहीं चला, बिकॉज हमने सिर्फ ये एंगल पे फोकस किया था, बराबर है? तो वैसे अगर आप यहाँ पे इस एंगल पे फोकस करोगे तो ये चीज मिलना मुश्किल है. सिर्फ एंगल पे फोकस करोगे तो ये चीज मिलना मुश्किल है. तो देखो हमने कैसे प्रूव किया. To prove that sec hyperbolic inverse of sin theta is log of cot of theta by 2, I assume let sec hyperbolic inverse of sin theta is y. That means sin theta is sec hyperbolic of y. That means sin theta is sec hyperbolic of y. That means sin square theta is sec hyperbolic square of y. मैंने क्या किया? पहले तो स्क्वायर किया. सबसे पहले मैंने तो स्क्वायर किया. फाइन. सो साइन स्क्वायर थीटा मिल गया सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ y. फिर जाके मैंने स्क्वायर हाइपरबोलिक आइडेंटिटी अप्लाई किया. आई नो दैट 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर इज सेम एज सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर. सो मुझे साइन स्क्वायर थीटा मिला 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर. दैट मींस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ y मुझे मिला 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. दैट मींस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ y मुझे मिला cos स्क्वायर थीटा. That means tan hyperbolic of y मुझे मिला cos theta. That means y मुझे मिला tan hyperbolic inverse of cos theta. Okay? मतलब देखो मैंने कैसे 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 डाइवर्ट करके गया. मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि क्या sin theta का cot theta by 2 से कनेक्शन है, तो you find the link that yes there was a connection because sin theta can be written as 2 sin theta by 2 cos theta by 2. बट मैं तो उसमें गया ही नहीं. देखो व्हाट आई डिड, मैं जाके tan हाइपरबोलिक ऑफ y पे आ गया. मैं जाके tan हाइपरबोलिक ऑफ y पे आ गया. कैसे आया मैं tan हाइपरबोलिक ऑफ y पे? how does it strike that we have to come to this tan hyperbolic of y? Because of this sec hyperbolic of y. Because of this sec hyperbolic of y. There was a close connection between sec hyperbolic of y and tan hyperbolic of y. That is this square identity. Okay, तो जैसे ही मुझे sec hyperbolic of y मिला, मैंने इस आइडेंटिटी को रिकॉल किया. मैंने तुरंत इस स्क्वायर आइडेंटिटी को रिकॉल किया. The moment I get sec hyperbolic of y, so that's why I took square on both the side, so that I can get sec hyperbolic square of y. So I'll get 1 minus tan hyperbolic square of y sin square theta. So tan hyperbolic square of y is 1 minus sin square, that is cos square. That means tan hyperbolic of y is cos theta. मतलब अल्टीमेटली मैंने जाके क्या किया, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन क्रिएट किया. That means y is equal to tan hyperbolic inverse of cos theta. And then I literally use a definition of tan hyperbolic inverse. So by definition of tan hyperbolic inverse, I get 1 by 2 log of 1 plus x upon 1 minus x, मतलब 1 plus cos theta upon 1 minus cos theta. So it is 1 by 2 times log of 1 plus cos theta is nothing but 2 cos square theta by 2, and 1 minus cos theta is nothing but 2 sin square theta by 2. So this 2 get cancelled. Cos square upon sin square becomes cot square. Okay, so we get 1 by 2
log of cot square theta by 2. That is log of cot square theta by 2 raised to half, matlab under root of cot square theta by 2. How do you understand this step? ये कैसे आया? How this half log of cot square theta by 2 is written as log of root of cot square Yes, theta by sir. 2 by using this logarithmic raised to property. n. Yeah, log property का मैंने use किया. That is log of x raised to n is n log x. इस property को मैंने reverse way में apply किया. I apply this property in the reverse way. So n log x. This looks like n log x is equal to log x raised to n. Okay, I applied the same thing. But that x raised to n matlab raised to half power. Raised to half power matlab under root. So it is under root of cot square theta by 2. Under root of cot square theta by 2 matlab cot theta by 2. So my y is equal to log of cot of theta by 2. That is my right hand side. So see, I can easily get my right hand side. I never thought of ki I can able to prove my right hand side is also y. Yes, I proved my right hand side is also y. Okay, but for that purpose I need to take the help of this square identity. मुझे ये square identity का help लेना पड़ा. Okay, मुझे ये square identity का help लेना पड़ा. और कैसे strike हो कि मुझे यही square identity का help लेना है? From where does I strike that I have to take the help of this square hyperbolic identity? Once I get sin theta is equal to sec hyperbolic of y. तो ये sec hyperbolic of y से मुझे strike हुआ. Yes, कि मुझे ये square hyperbolic of identity use करना. I have to use this square hyperbolic identity. Then, see, because directly हम sec hyperbolic inverse का definition apply नहीं कर सकते ना, because we have not learned what is the definition of sec hyperbolic inverse. हमने सिर्फ sin hyperbolic, cos hyperbolic और tan hyperbolic ये तीन definition learn किए. So since we do not know what is sec hyperbolic inverse का definition, तो that's why उसको पहले sec में convert किया. फिर sec को इस tan से लिंक किया और फिर वो tan hyperbolic inverse का definition apply. तो देखो, if you look at these two questions, second question is comparatively difficult than the first question. Yes or no? And that is lengthy also comparatively. Compared to the first question, it is lengthy also. But in the first question, I have not used a definition of inverse hyperbolic. मैंने inverse hyperbolic का definition use ही नहीं किया. मैंने purely a method of assumption use किया. Whereas in the second case, I use the definition, but not for sec hyperbolic inverse. I use for tan hyperbolic. यहाँ पे मैंने definition भी use किया है और वो method of assumption भी use किया. Both I have done. Is it clear? Is it clear, everybody? Is it understood? Yes, no? Hello, am I audible? Yes, sir. Is it understood? थोड़ा सा tricky है because all of a sudden we have changed the track. All of a sudden ये strike होना चाहिए. Sin theta is equal to sec hyperbolic y आया, तो उससे मैंने लिंक किया इस स्क्वायर आइडेंटिटी से, तो ये आपको स्ट्राइक होना चाहिए. Yes, sir. ओके, मतलब आपने क्या किया, सेक हाइपरबोलिक को tan हाइपरबोलिक के फॉर्म में लिखा. ओके, क्यों लिखा आपने सेक हाइपरबोलिक को tan हाइपरबोलिक के फॉर्म में? बिकॉज आपके पास tan हाइपरबोलिक इनवर्स का डेफिनेशन है, आपके पास सेक हाइपरबोलिक इनवर्स का डेफिनेशन नहीं है. बराबर ना? आपके पास साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का डेफिनेशन है, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स का डेफिनेशन है और tan हाइपरबोलिक इनवर्स का डेफिनेशन है. तो ये जो इनवर्स, ये जो हाइपरबोलिक फंक्शन था, इसको मैंने tan से लिंक किया सो दैट आई कैन गेट tan हाइपरबोलिक इनवर्स. मैंने इसको tan हाइपरबोलिक से लिंक किया सो दैट आई कैन गेट tan हाइपरबोलिक इनवर्स. अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. Let me take next question now. This is a very important question because it has 5 parts. You can see in the earlier old course, even before that credit and grading system, when it was introduced by University of Mumbai, even before that, this type of question used to come for 8 marks. जिसके 4 parts होते थे, हर part का 2-2 mark. मतलब एक question 8 mark का होता है. Okay. And nowadays 8 mark is your qualifying score for your internal examination out of 20. But now in descriptive paper
this kind of questions were expected for 8 marks. तो look, informations दिया है सिर्फ cos hyperbolic of x को sec theta, that's it, और कुछ नहीं दिया, सिर्फ दिया है cos hyperbolic of x is sec theta, and you have been asked to prove x is equal to log of sec theta plus tan theta. Theta is equal to pi by 2 minus 2 tan inverse e raised to minus x. Then sin hyperbolic of x is equal to tan theta. Tan hyperbolic of x is equal to tan theta. And tan hyperbolic of x by 2 is equal to tan of theta by 2. Okay? ये 5 रिजल्ट मुझे प्रूव करने हैं इस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर. Try to read this example very carefully. Cos hyperbolic of x दिया है sec theta और तुमको प्रूव करना है sin hyperbolic of x is tan theta, tan hyperbolic of x is sin theta, tan hyperbolic of x by 2 is plus minus tan theta by 2, x is equal to log of sec theta plus tan theta और theta is equal to pi by 2 minus tan inverse e raised to minus. कितने सारे चीजें प्रूव करना है सिर्फ ये क्वेश्चन के ऊपर. Does this reminds you something when you look at this question? अगर आप ये क्वेश्चन ठीक से देखते हो, if you observe this question very carefully, does it remind you something? Yes, anybody? Does it remind you something when you read this question? कुछ याद आया? Look at this fifth result. Look at this fifth result. Fifth result देखो. Tan hyperbolic of x by 2 is equal to plus minus tan of theta by 2. Look at this first result. Okay, let me take you to the flashback. Look at this example. Tan x by 2 is equal to tan hyperbolic of u by 2. इससे मैंने प्रूव किया था sin hyperbolic of u is tan x, cos hyperbolic of u is sec x, and u is equal to log of tan of pi by 4 plus x by 2. Look at this example and look at this example. क्या डिफरेंस है दोनों में बताओ? हमारे पास ये था tan hyperbolic tan of x by 2 is equal to tan hyperbolic of x by 2, tan hyperbolic of u by 2. Okay, we are having this result. और इस बेसिस पे हमने प्रूव किया था, sin hyperbolic of u is equal to tan x. हमने प्रूव किया था cos hyperbolic of u is equal to sec x, और फिर हमने प्रूव किया था u is equal to log of tan of pi by 4 plus x by 4. ये तीन रिजल्ट हमने प्रूव किए थे इस इंफॉर्मेशन के जरिए. अभी अब एग्जांपल देखो, अभी आपके पास क्या है? x की जगह पे थीटा है ना? डोंट यू थिंक सो? हेलो, डोंट यू थिंक सो x की जगह पे थीटा है? यस नो? हेलो, am I audible? स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. x की जगह पे थीटा है, तो देखो यहाँ पे हमने प्रूव किया था cos hyperbolic of u is equal to sec x. अभी हमको दिया है cos hyperbolic of u x is equal to sec theta, मतलब u की जगह पे x आ गया और x की जगह पे थीटा आ गया. In place of u now there is x and in place of x there is theta. तो जो चीज हमने प्रूव किया था, now the same thing is given as a hypothesis. और जो चीज हाइपोथेसिस था वो अभी हमको प्रूव करना है. देखो tan hyperbolic of u by 2 is equal to tan of x by 2, मतलब tan of theta by 2 plus minus tan of theta by 2.
तो ये चीज अभी मुझे प्रूव करना है, जबकि ये चीज मुझे दिया था उस एग्जांपल। ओके, और sin हाइपरबोलिक ऑफ u इज इक्वल टू tan x, ये हमने प्रूव किया था। इधर भी मुझे वही प्रूव करना है, sin हाइपरबोलिक ऑफ x इज इक्वल टू tan थीटा, वही चीज प्रूव करना है, बट माय डेटा इज डिफरेंट। हियर माय गिवन डेटा वाज समथिंग एल्स, हियर माय गिवन डेटा इज समथिंग एल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एडिशनली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस एग्जांपल। आज के लेक्चर का सबसे पहला एग्जांपल यही था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस एग्जांपल। इट इज द सेम क्वेश्चन, सिर्फ उसमें दो चीज एक्स्ट्रा पूछा है, एक तो ये थीटा का वैल्यू और दूसरा ये tan हाइपरबोलिक ऑफ x इज इक्वल टू sin थीटा। ये सेकंड और फोर्थ रिजल्ट हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, अदरवाइज ये तीन रिजल्ट जो है ना, ये एग्जांपल और ये एग्जांपल सेम, सिर्फ हमने एक रिजल्ट और हमारा हाइपोथेसिस जो है था वो हमने इंटरचेंज कर दिया। इज इट क्लियर? Yes, sir. सो सिंस व्हाट इज गिवन नाउ, तो अभी चलो एक एक करके इसको प्रूव करते हैं। दिखने में एग्जांपल बहुत डिफिकल्ट दिखता है, बट एक्चुअली नहीं है। cos hyperbolic of x is equal to sec theta, cos hyperbolic of x is equal to sec theta, ये दिया है और हमको प्रूव क्या करना है, x is equal to log of sec theta plus tan theta, ये हमको प्रूव करना है। x is equal to log of sec theta plus tan theta, ये प्रूव करना है, और cos hyperbolic of x दिया है sec theta। तो लोग इससे मैं डायरेक्टली x फाइंड कर सकता हूं ना, cos hyperbolic of x अगर दिया है तो क्या मैं उससे डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकता हूं? यस। तो व्हाट इज x? cos hyperbolic inverse of sec theta। यूज डेफिनेशन ऑफ cos hyperbolic inverse। व्हाट इज cos hyperbolic inverse of x? log of x plus root of x square minus 1, तो ये बन जाएगा log of sec theta plus root of sec square theta minus 1। what is sec square theta minus 1? tan square theta, under root of that is tan theta। तो आ गया x is equal to log of sec theta plus tan theta। इतना सिंपल हो गया, देखो पहला रिजल्ट। You never thought कि पहला रिजल्ट ऐसा प्रूव हो जाएगा। ओके, दिखने में तो कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, log of sec theta plus tan theta, अरे कैसे प्रूव करेंगे, मेरे पास सिर्फ cos x is equal to sec theta है। तो कोई ये प्रॉब्लम देख के कोई सोचेगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन इनवर्स हाइपरबोलिक से भी किया जा सकता है। सेम क्वेश्चन वी सॉल्व्ड अर्लियर यूजिंग हाइपरबोलिक फंक्शन। यूजिंग हाइपरबोलिक फंक्शन सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, अभी सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। दिस कैन आल्सो बी डन, दिस कैन आल्सो बी डन बाय यूजिंग इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। तो देखो cos हाइपरबोलिक x जो था, cos हाइपरबोलिक x, इसको कन्वर्ट किया cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x में। जो cos हाइपरबोलिक x था उसको कन्वर्ट किया cos हाइपरबोलिक इनवर्स में, तो x बन जाएगा cos h इनवर्स ऑफ sec थीटा, और फिर cos h इनवर्स का डेफिनेशन अप्लाई किया, एंड देन वी गेट x इज इक्वल टू log of sec थीटा प्लस tan थीटा। फिनिश। यस, इज इट क्लियर? फर्स्ट रिजल्ट। Yes, sir. Yes, sir. Okay, now second result is important and that is comparatively difficult to prove। second result, इसलिए मेरे को यहाँ पे देखो मैंने स्टार करके रखा। now what we need to prove? we need to prove theta is equal to pi by 2 minus 2 tan inverse e raised to minus x। theta is equal to pi by 2 minus 2 tan inverse e raised to minus x। is your attendance taken? No, sir. Who takes the attendance? So mostly Vivek sir takes at the last. He takes the snap of the participants. अच्छा, Yeah. just a minute, let me get that. Otherwise, Kapil sir comes and take in the between.
Kapil sir comes in between. Na? Yes. Yeah, can you just do me a favor? Can any one of you please take a snapshot of participants? Okay, sir. I will take it. Pratham? Huh? Yes. Pratham, can you take? Yes, sir. And then you can forward it to me on WhatsApp, okay? Yeah, sure, sir. You have my number, no? It is there in the CR group. Yes, yes. Yeah. Yeah. So, now second we have to prove that theta is equal to pi by 2 minus 2 tan inverse e raised to minus x. Now, to prove this result, theta prove karna hai. Okay, if I try to prove with the help of hypothesis, what is hypothesis? Cos hyperbolic of x is equal to sec theta. तो उससे अगर मैं थीटा प्रूव करने जाऊंगा तो मुझे sec inverse of cos hyperbolic x बनेगा. Sec inverse I cannot simplify further, correct? Sec inverse को मैं कैसे आगे simplify कर सकता हूँ? Right? I cannot simplify it for the sec inverse. So straight away from this hypothesis, it looks difficult to prove the second result. So what we can do is, don't use hypothesis. Use the first result जो आपने अभी prove किया है. Okay? जो आपने prove किया है, वही result हम use करेंगे. कैसे पता चलेगा कि ये first result का मैं help कर ले सकता हूँ? How I can take the help of this first result to prove the second result? You know, this gives me the hint. E raised to minus x. ये मुझे hint देगा. First result talks about x is equal to log of something. That means first result gives me e raised to x is equal to something. Yes or no? तो पहला result मुझे e raised to x के form में आ जाता है. तो e raised to x के form में आ गया तो e raised to minus x भी आ सकता है. I can easily get my e raised to minus x. So that's way, in that way I can say my first result can be linked with this by focusing on this e raised to minus x. I can able to do that. So same thing I'm doing. To prove this theta is equal to pi by 2 minus 2 tan inverse e raised to minus x, we have x is equal to log of sec theta plus tan theta. That implies minus x is equal to what? क्यों minus x? Because मुझे e raised to minus x find करना है. मैंने क्या किया? Minus x is equal to मतलब e raised to x find करके फिर उसका एक्सपोनेंट रेसिप्रोकल करने से अच्छा मैंने क्या किया? डायरेक्टली इस x को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. तो the moment I multiply minus directly to this x, I get minus x is equal to minus of log of sec theta plus tan theta. That means log of sec theta plus tan theta the whole inverse. That means e raised to minus x is equal to sec theta plus tan theta the whole inverse. यहाँ तक समझ में आया? Is it understood so far? E raised to minus x is equal to this log I have shifted from right to left. So after shifting this log from right to left, I'll get e raised to minus x is equal to sec theta plus tan theta the whole inverse. But मुझे तो sec theta plus tan theta the whole inverse ऐसे नहीं रखना है because I don't have to prove about e raised to minus x. I have to prove about theta. I have to prove something about theta. Okay, pi by 2 और tan inverse e raised to minus x उस sense में मुझे prove करना है. I have to prove something about theta. So I need to simplify this tan theta sec theta plus tan theta the whole inverse. इसको मुझे simplify करना पड़ेगा. तो look, e raised to x is equal to sec theta plus tan theta the whole inverse. That is 1 upon sec theta plus tan theta. Okay, and then by rationalization, it is sec theta minus tan theta को मैंने multiply किया numerator and denominator. I'll get sec theta minus tan theta divided by sec square theta minus tan square theta. Now I know that 1 plus tan square is sec square. So sec square minus tan square is 1. So I'll get sec theta minus tan theta upon 1 means e raised to minus x is coming as sec theta minus tan theta. Simple. Now when e raised to minus x is coming as sec theta minus tan theta, it means 1 by cos theta minus sin theta by cos theta. That means 1 minus sin theta
अपॉन cos थीटा। ओके, अभी देखो वो जो एग्जांपल था कॉट का, उसमें भी हमने यही चीज किया था। कॉट थीटा को, अभी cos थीटा को मुझे हाफ एंगल में लिखना है, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अभी ये कैसे स्ट्राइक होगा आपको, इसको हाफ एंगल में लिखना है, ये कैसे स्ट्राइक होगा? एनीबॉडी? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा को मुझे हाफ एंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज यहां तक आके आप रुक सकते हो ना, यहां तक आके आप स्टक हो जाओगे, यू विल गेट स्टक एट दिस मोमेंट। ज्यादा से ज्यादा आप यहां तक सिंप्लीफाई करोगे, उसके आगे ये इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, ये स्ट्राइक कहां से होगा एंड व्हाई वी आर कन्वर्टिंग इनटू हाफ? द रीजन इज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कि हम कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, हम कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? The reason is this, हम फाइंड अभी क्या कर रहे हैं, e raised to minus x को फाइंड कर रहे हैं, बराबर? Yes or no? We are finding e raised to minus x ना currently? Hello? Am I audible? Sir. Students? Yes, sir. Yeah, I'm finding e raised to minus x, right? But इस रिजल्ट में मुझे क्या है, e raised to minus x, that is the angle of tan inverse, तो मुझे tan inverse of e raised to minus x है। To get tan inverse of e raised to minus x, it means it is enough to show e raised to minus x is in the form of tan, बराबर है कि नहीं? इसका मतलब मुझे e raised to minus x को tan के फॉर्म में लाना। Are you getting my point? अगर मैं e raised to minus x को tan के फॉर्म में लाता हूं, तो ही मुझे tan इनवर्स ऑफ e raised to minus x ये टर्म मिल पाएगा। यस, तो ही जाके मुझे tan इनवर्स ऑफ e raised to minus x ये टर्म मिल पाएगा। तो सिंस टू कन्वर्ट e raised to minus x और टू राइट e raised to minus x in the form of tan, that's the reason I am further simplifying this part as cos theta is cos square theta by 2 minus sin square theta by 2, and 1 minus sin theta is cos theta by 2 minus sin theta by 2 the whole square. So cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 is cos theta by 2 minus sin theta by 2, cos theta by 2 plus sin theta by 2, cos theta by 2 minus sin theta by 2 cancel, we get e raised to minus x is equal to cos theta by 2 minus sin theta by 2 upon cos theta by 2 plus sin theta by 2. Dividing throughout by cos theta by 2, we get 1 minus tan theta by 2 upon 1 plus tan theta by 2. And that is nothing but tan of pi by 4 minus theta by 2, because this is tan A minus tan B upon 1 plus tan A into tan B. Yes, no? Yes or no? Is it correct? It is in the form of 1 minus, is it in the form of tan A minus tan B upon 1 plus tan A into tan B? Yes or no? Your tan A is nothing but 1. It means it is tan pi by 4. And that's the reason we get this is tan of pi by 4 minus theta by 2. इसके लिए मुझे मिला tan of pi by 4 minus theta by 2. Fine. This implies tan inverse of e raised to minus x is equal to pi by 4 minus theta by 2. This implies tan inverse of e raised to minus x is equal to pi by 4 minus theta by 2. That means theta by 2 is equal to pi by 4 minus tan inverse e raised to minus x. It means theta is equal to 2 times pi by 4, that is pi by 2, minus 2 times tan inverse of e raised to minus x. So theta is equal to pi by 2 minus 2 tan inverse of e raised to minus x. This is what we wanted to prove. Theta is equal to pi by 2 minus 2 times tan inverse of e raised to minus x. Okay? तो देखो ये हाइपोथेसिस से प्रूव नहीं किया, मतलब ये जो मुझे डेटा दिया था cos हाइपरबोलिक ऑफ x is equal to sec थीटा, उससे मैंने प्रूव नहीं किया, बिकॉज उससे ये प्रूव करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उससे ये चीज प्रूव करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, उसके लिए मुझे cos हाइपरबोलिक ऑफ x का डेफिनेशन लिख के वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके e रेज़ टू u का e रेज़ टू x का वैल्यू फाइंड करना पड़ता था,
फिर मुझे e raised to minus x का वैल्यू मिलता था, ओके, और फिर मैं ये सब प्रूव करता था, तो उसके कंपैरिजन में आई फील दिस इज अ सिंपल ऑप्शन। रिजल्ट जो कि आपने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ओके, व्हाई डोंट यू यूज दैट रिजल्ट टू प्रूव फर्दर, ओके। नेक्स्ट, आई होप इट इज अंडरस्टूड एवरीवन। Does the second part is clear? Okay, the second part is सबसे important. अच्छा, it doesn't mean that this is the only way to solve the second part. As I said, cos hyperbolic x is equal to sec theta का यूज करके भी तुम ये प्रूव कर सकते हो, बट उससे थोड़ा सा लेंथी होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा. That's why I prefer this option of using x is equal to log of sec theta plus tan theta. I prefer this option. Understood? Okay. Now you tell me, अगर मुझे थर्ड रिजल्ट प्रूव करना है, sin hyperbolic of x is equal to tan theta, how I should proceed? What should be my approach? क्या लगता है आपको? That approach I already explained in this example, जो मैंने exercise 22 में solve किया था last में. That approach I already explained over there. So now tell me how one should go ahead about it. Sin hyperbolic of x is equal to tan theta को मैं कैसे प्रूव करूंगा? Using first result, using second result, or using given data, means given hypothesis. What do you think? Yes, anyone? What is the given thing? Given data क्या दिया है? Hello? Students, are you listening to me? Yes, sir. What is the given data? Cos hyperbolic of x is equal to Sec. sec theta. theta. Given data is cos hyperbolic of x is equal to sec theta. और थर्ड रिजल्ट में प्रूव क्या करना है? Sin hyperbolic of x is equal to tan theta. कुछ कनेक्शन है? कुछ कनेक्शन है? क्या कनेक्शन है बताओ? मैंने एरो इंडिकेट किया. क्या कनेक्शन है? There is a connection between cos hyperbolic of x and sin hyperbolic of x through that square identity. What was that square identity of cos hyperbolic x? Cos Sec. hyperbolic x minus sin hyperbolic square x is equal to 1. Very good, very good. So that is the hint. Okay, मतलब अगर मेरे पास cos hyperbolic x is equal to something दिया है, और अगर आपको प्रूव करना है sin hyperbolic x is equal to something, simply connect cos hyperbolic x and sin hyperbolic x via that identity. That is cos hyperbolic square minus sin hyperbolic square is equal to 1. Simple. Okay, तो वो रिजल्ट मेरा उससे इजीली हो जाएगा. देखो, तो to prove this sin hyperbolic of x is equal to tan theta, we have cos hyperbolic of x is equal to sec theta. तो cos hyperbolic square minus sin hyperbolic square is equal to 1. मतलब sec square theta minus sin hyperbolic square theta, sin hyperbolic of x is equal to 1. So sec square theta minus 1 is equal to sin hyperbolic square of x. Sec square theta minus 1 is tan square theta is equal to sin hyperbolic square of x. That means sin hyperbolic of x is equal to tan theta. आ गया. Done. तो कितना आसान है? Okay? कितना आसान है? Simple. Understood, ना? But this third result is difficult to prove. This third result is difficult to prove using second result. Second result से third result prove करना difficult है. Can I make use of the first result to prove the third result? Anybody? क्या मैं पहला रिजल्ट यूज कर सकता हूं sin hyperbolic of x equal to tan theta प्रूव करने के लिए? Yes or no? What is the first result? X is equal to
Yes. What is the first result? X is equal to log of sec theta plus tan theta. इसका मतलब हाँ मतलब e raised to x तुमको मिलेगा ना. It means e power x is equal to sec theta plus tan theta. तो e power x अगर sec theta plus tan theta है तो e power minus x फाइंड करो और उस e power x और e power minus x को यूज करो to prove sin hyperbolic of x. उसी e power x और e power minus x को यूज करो to prove tan hyperbolic of x and so on. मतलब हम पहला रिजल्ट का यूज करके भी तीसरा और चौथा रिजल्ट इजीली प्रूव कर सकते हैं. फाइन. नाउ using data, if I prove this third result by connecting that with the square identity. Hello, I'm audible, na? So using data, if I prove that sin hyperbolic of x is equal to tan theta with the help of that square identity, okay. So how one can go ahead with the fourth question, fourth result? क्या फिर से गिवन डेटा का यूज करके फिर से भी tan hyperbolic of x is equal to sin theta को भी ऐसे ही प्रूव करना है क्या और कोई तरीका है? What do you think? Is there any other shortcut or the way I used data to prove the third result? Given Same data way? divide by third. Very good. Third result divided by given data. जो the given hypothesis है और third result जो है इन दोनों को यूज करो. What is tan hyperbolic of x? Sin hyperbolic of x upon cos hyperbolic of x. What is sin hyperbolic of x? Tan theta. What is cos hyperbolic of x? Sec theta. यूज करो. Simple. देखो. Now to prove that tan hyperbolic of x is equal to sin theta, tan hyperbolic of x हो गया sin hyperbolic of x upon cos hyperbolic of x. By result 3, sin hyperbolic of x is proved as tan theta and given data cos hyperbolic of x is equal to sec theta. So tan theta upon sec theta gives me sin theta. That is my fourth result. Okay, that is my fourth result. Now look at this fifth result and tell me how this fifth result can be cracked. How this fifth result can be proved. By using what? Do I need to use a given data? Do I need to use a first result? Do I need to use a second result or third result or fourth result or something else? क्या कनेक्शन है tan hyperbolic of x by 2 का tan hyperbolic of x by 2 का किसके साथ कनेक्शन है? tan hyperbolic of x by 2 का कनेक्शन किसके साथ है? tan hyperbolic x by 2 का कनेक्शन क्या tan hyperbolic of x के साथ है, क्या sin hyperbolic of x के साथ है, या cos hyperbolic of x के साथ है, या simply x के साथ है, या थीटा के साथ है? उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कौन सा how to prove this particular result. Yes, anybody? Anyone? चलेगा. जो तुमको समझ में आता है, जो तुमको स्ट्राइक होता है, you can share your answer with me. जरूरी नहीं कि वो करेक्ट होना चाहिए. In fact, I would suggest that you should share your answer. Okay, even if it is wrong, then you will learn. So in fact, वो अच्छा होगा because मतलब you will realize where you are committing the mistakes. Yes, anybody? Tan hyperbolic of x by 2 का लिंक किसके साथ है? कौन से रिजल्ट के साथ है या डेटा के साथ है? क्या लगता है आपको? Yes, I cannot hear you properly. Tan hyperbolic second result से तो बहुत मुश्किल है. Second result is about I guess theta. cos hyperbolic of x को
हाफ एंगल फॉर्मूला में हाँ, लाइक वेरी गुड, 1 वेरी गुड, माइनस 10 वेरी गुड। कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स को हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके tan हाइपरबोलिक ऑफ x by 2 के फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, सिर्फ उतना ही नहीं, साइन हाइपरबोलिक ऑफ x को भी हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके tan हाइपरबोलिक ऑफ x by 2 के फॉर्म में लिख सकते हो। नॉट ओनली दैट, tan हाइपरबोलिक ऑफ x को भी हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके आप tan हाइपरबोलिक ऑफ x by 2 के फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब फिफ्थ रिजल्ट प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। You can use a given data, or you can use a third result, or you can use a fourth result. In fact, rather I would say you can use a first result also. आप फर्स्ट रिजल्ट भी यूज कर सकते हो। फर्स्ट रिजल्ट इज अबाउट x, तो x से x by 2 फाइंड करो। x by 2 फाइंड किया तो उससे e raised to x by 2 फाइंड करो, और फिर उसको tan हाइपरबोलिक ऑफ x by 2 में सब्स्टिट्यूट करो। सिंपल। तो फिफ्थ रिजल्ट प्रूव करने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन है। फिफ्थ रिजल्ट प्रूव करने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। तो लुक, आई यूज द गिवन डेटा ओनली। वी नो दैट बाय हाफ एंगल हाइपरबोलिक फॉर्मूला cos hyperbolic of x is equal to 1 plus tan hyperbolic square of x by 2 upon 1 minus tan hyperbolic square of x by 2. By data, cos x is given as sec theta. Okay, this means 1 plus tan square x by 2 upon 1 minus tan square x by 2 is equal to sec theta. That is 1 upon cos theta. Okay, that is equal to 1 upon. Now again, cos theta को भी half angle formula में लिखो। तो cos theta is written as 1 minus tan square theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2. तो रेसिप्रोकल किया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 plus tan square theta by 2 upon 1 minus tan square theta by 2, and left hand side was 1 plus tan hyperbolic square of x by 2 upon 1 minus tan hyperbolic square of x by 2. So on comparison, term by term comparison, what do we get? अगर मैं टर्म बाय टर्म कंपैरिजन करता हूं तो मुझे मिलेगा tan hyperbolic square of x by 2 is equal to tan square of theta by 2. That means tan hyperbolic of x by 2 is equal to plus or minus tan of theta. That is my fifth result. I hope it is understood, everybody. I hope it is understood, everyone. Yes, no? Yes, sir. Yes? Okay. Fine. There is one more and then this exercise will get over. Okay. One more example. तो फिफ्थ रिजल्ट इनफैक्ट मैंने हाइपोथेसिस से प्रूव किया। मैं साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स से भी प्रूव कर सकता था, tan हाइपरबोलिक ऑफ एक्स से भी प्रूव कर सकता था। सपोज अगर मैं यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का फॉर्मूला लिखता तो फॉर्मूला क्या आता था? एनीबॉडी? इंस्टेड ऑफ cos हाइपरबोलिक एक्स अगर मैं फॉर्मूला लिखता था साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का, तो व्हाट विल बी दैट फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला फॉर साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स? एनीवन? व्हाट विल बी दैट साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला? क्या बनता था? Yes, it is 2 tan hyperbolic of x by 2 divided by 1 minus tan hyperbolic square of x by 2. That will be sin hyperbolic of x. Similarly, tan hyperbolic of x also I would have used. Tan hyperbolic of x would have become 2 tan hyperbolic of x by 2 divided by 1 plus tan hyperbolic square of x by 2. ये tan hyperbolic of x का बनता था, तो मैं वो भी यूज कर सकता था। तो it was, there was a choice. Now look at the next question. This is complicated. Prove that tan inverse of I times x minus a upon x plus a is equal to
minus I by 2 times log of A by X. Through that, tan inverse of I times X minus A upon X plus A is equal to minus I by 2 times log of A by X. ओके अभी ये रिजल्ट दिखने में तो कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, ये रिजल्ट दिखने में तो कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। अभी इसका हिंट क्या है पता है? टू प्रूव द गिवन रिजल्ट, टू प्रूव द गिवन रिजल्ट, देखो मैंने क्या लिखा है, इनफ टू प्रूव x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, इनफ टू प्रूव ये जो एंगल है ना tan इनवर्स का, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए in the form of tan hyperbolic of x, enough to prove x minus a upon x plus a in the form of tan hyperbolic. अगर मैं प्रूव कर पाता हूं कि x minus a upon x plus a is tan hyperbolic, तो पता है एंगल क्या हो जाएगा? एनीबॉडी? अगर मैं ये राउंड ब्रैकेट को tan hyperbolic प्रूव करता हूं तो मेरा ये एंगल क्या हो जाएगा? I times yes, I times tan hyperbolic ना, I times tan hyperbolic हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। हाँ, अभी देखो एक रिलेशन है tan और tan hyperbolic में, क्या रिलेशन है? tan of I times z is equal to I times tan hyperbolic of z. The relation is tan of I times z is equal to I times tan hyperbolic of z. तो ये ब्रैकेट जो है ना, ये बनेगा I times tan hyperbolic of something. What is I times tan hyperbolic of something? Tan of I times something. मतलब ये पूरा ब्रैकेट मेरा हो जाएगा tan of I times something. तो tan inverse और tan कैंसिल हो जाएगा. That is the reason, that is the logic of this exercise. लॉजिक क्या है एक्सरसाइज का? ये बाहर tan inverse है, राइट हैंड साइड में मुझे किधर tan inverse नहीं चाहिए। अगर ये राइट tan इनवर्स है, इसका मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट को tan में मुझे कन्वर्ट करना है। स्क्वायर ब्रैकेट को tan में कन्वर्ट करना मतलब ये राउंड ब्रैकेट को tan हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना। क्यों? क्योंकि I टाइम्स tan हाइपरबोलिक होता है tan, I टाइम्स tan हाइपरबोलिक होता है tan, तो दिस इज I ऑलरेडी देयर, तो इनफ टू प्रूव दिस राउंड ब्रैकेट इनटू tan हाइपरबोलिक। फाइन, ओके। अभी tan हाइपरबोलिक का डेफिनेशन क्या है पता है? What is tan hyperbolic of x? As per sin hyperbolic and cos hyperbolic, it is e raised to x minus e raised to minus x divided by e raised to x plus e raised to minus. Okay, it is e raised to x minus e raised to minus x upon e raised to x plus e raised to minus. तो ये डेफिनेशन है tan hyperbolic। ये डेफिनेशन मुझे यहाँ पे एंगल में क्रिएट करना है, ये ऐसा डेफिनेशन मुझे एंगल में क्रिएट करना है। ओके, इफ यू लुक एट दिस डेफिनेशन एंड इफ यू लुक एट दिस एंगल, एक चीज कॉमन दिख रही है आपको इस स्ट्रक्चर में और इस डेफिनेशन में। क्या चीज कॉमन दिख रही है आपको? एनीबॉडी? एनीबॉडी? If you look at this definition of tan hyperbolic closely and if you look at this angle closely, what is the, कौन सा चीज कॉमन है इन दोनों में? इन दोनों में कौन सा चीज कॉमन है? Yes, doesn't matter, you give something wrong answer, चलेगा, कोई problem, at least you should try. What is the common link between these two things? में माइनस कॉमन, हाँ, न्यूमरेटर में माइनस है और डिनोमिनेटर में प्लस है। दैट इज द ओनली थिंग व्हिच इज कॉमन बिटवीन दिस टू। ओके, ये दोनों में एक ही चीज कॉमन है कि दोनों रैशनल स्ट्रक्चर है। रैशनल मतलब p by q का फॉर्म है, बराबर है। न्यूमरेटर में माइनस है और डिनोमिनेटर में प्लस है, दैट इज द ओनली थिंग कॉमन। बट अगर मुझे इसको tan हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ पे मेरा एक पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल आना चाहिए और यहाँ पे मेरा नेगेटिव एक्सपोनेंशियल आना चाहिए। मतलब जो भी एक्सपोनेंशियल यहाँ पर है उसका यहाँ पे रेसिप्रोकल आना चाहिए। दैट इज द की। ओके, दैट इज तो आई स्टार्टेड विद LHS, tan इनवर्स ऑफ I टाइम्स x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो अभी देखो यहाँ पर मैंने एक्सपोनेंशियल को कैसे क्रिएट किया। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कांस्टेंट है ना a, इसको मैं हटा रहा हूँ।
I'm taking this a common from the numerator, from the denominator, so a getting cancelled. So I'll get x by a minus 1 divided by x by a plus 1. I'll get x by a minus 1 divided by x by a plus 1. Now you have to put x by a is equal to e raised to 1. अभी आपको क्या पुट करना है? x by a is equal to e raised to y पुट करना है. तो ये बन जाएगा tan inverse of I times e raised to y minus 1 upon e raised to y plus 1. बराबर है? बट मुझे चाहिए पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल माइनस उसका रेसिप्रोकल. तो यहाँ पे तो 1 आया है, एक्चुअली यहाँ पे मुझे e raised to minus y होना चाहिए. यस और नो? यस और नो? I am expecting e raised to y minus e raised to minus y upon e raised to y plus e raised to minus y, something like that. बट मुझे क्या मिला? ये कांस्टेंट a को कैंसिल आउट करने के बाद मुझे मिला x by a को अज्यूम करने के बाद as e raised to y, मुझे मिला e raised to minus y minus 1 upon e raised to y plus 1. ये चीज मिला. मुझे 1 की जगह पे e raised to minus y चाहिए. तो क्या होगा अगर मैंने e raised to minus y से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो क्या होगा? यहाँ पे e raised to minus y आ जाएगा ना? यस और नो? यस और नो? बट अगर आपने यहाँ पे e raised to minus y से मल्टीप्लाई किया तो पता है जो पहला e raised to y जो टर्म था ना वो 1 बन जाएगा. मतलब 1 को तो आपने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, जो एक्सपोनेंशियल था ना वो 1 हो जाए. फिर से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा. मुझे दोनों प्लेसेस पे एक्सपोनेंशियल चाहिए. तो दैट्स व्हाई लुक व्हाट आई डिड. आई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e raised to minus y by 2. ओके, तो e raised to y minus y से मल्टीप्लाई नहीं किया, e raised to minus y by 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. So in that case tan inverse of I times what is e raised to y into e raised to minus y by 2? That is e raised to y by 2 minus what is 1 into e raised to minus y by 2? That is e raised to minus y by 2 upon denominator is also e raised to y by 2 plus e raised to minus y by 2. Now look at this structure. Does it look like e raised to x minus e raised to minus x upon e raised to x plus e raised to minus x? This bracket. Yes, no? Sir. So this look like e raised to x minus e raised to minus x upon e raised to x plus e raised to minus x. जो होता है tan inverse x, तो यहाँ पे y by 2 है, मतलब ये हो जाएगा tan hyperbolic of y by 2. ये हो जाएगा tan hyperbolic of y by 2. Then I times tan hyperbolic of y by 2 becomes tan of I times y by 2. Using this relation, ये relation मैंने यूज किया रिवर्स ऑर्डर में यूज किया. ये relation जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक का, वो relation मैंने यूज किया, but I use this relation in the reverse order. So when I use this relation in the reverse order, I get it is tan of I times y by 2. Now tan inverse tan cancel, we'll get I by 2 times y. What was assumption? E raised to y क्या था? Log e raised to y था x by y. तो इसका मतलब y का वैल्यू क्या होगा? Log x by y. So that is I by 2 times log x by y. I by 2 times log x by y. Is this what we wanted to prove? No. मुझे माइनस आई बाई 2 इंटू लॉग ए बाई एक्स चाहिए, जबकि मुझे मिला है आई बाई 2 लॉग एक्स बाई ए. क्या दोनों सेम है? क्या डिफरेंट है? यस, क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है? एनीबॉडी? I by 2 log of x by a and minus I by 2 log of a by x. Thus both are same or they are different? Both are same. Yes, sir. Both are same. Look, I by 2 log of x by a को ही मैंने लिखा है I by 2 log of
a by x का inverse, I by 2 log of x by a को लिखा है, isn't it? I wrote it as I by 2 log of a by x the whole inverse. I by 2 log of a by x the whole inverse is same as minus I by 2 into log of a by x is same as minus I by 2 into log of a by x, and that is my right hand side. So thus we have proved left hand side is equal to right hand side. Simple. Okay. So this looks complicated to prove because of this tan inverse, and this angle is I times x minus a upon x plus a. That's why this looks complicated to prove. But actually it is not like that. Okay. Actually it is not like that. So since there is a tan inverse, since there is a iota, so what we thought is better we convert this square bracket into tan ratio. If we convert this square bracket into tan ratio, the tan inverse and tan will get cancelled. That is the basic idea. That is the basic logic. Now to convert this square bracket is into tan ratio, enough to convert this round bracket into tan hyperbolic ratio, because I times tan hyperbolic hota hai tan ratio. So that is another hint, or that is another concept for this particular example. And therefore our target is on this angle only, x minus a upon x plus a. कैसे इसको tan hyperbolic में convert कर सकते हैं? तो पहले हमने क्या किया? Constant a we have taken it common, we have cancelled it out. Okay, first of all constant a we have taken it common, we have cancelled it out. Then we have assumed x by a is equal to e raised to y. Then we did a manipulation. हमने एक manipulation किया. ऐसा manipulation किया, inside the angle we have multiply as well as divide by, we have multiplied as well as divided by e raised to minus y by 2, so that we can get tan hyperbolic wala structure. Basically tan hyperbolic wala structure matlab positive exponential minus negative exponential upon positive exponential plus negative exponential. Okay, so that is the hint. Clear? So this is all about your inverse hyperbolic functions. Now after this there is a 24th exercise which is about logarithm of a complex number. So we will take that in the second half. And in the resource book, before that logarithm of a complex number, there is something written as separation into real and imaginary part. So separation into real and imaginary part जो है and logarithmic function. Okay, so that separation of real and imaginary part, that was your self-study topic basically. Okay, so separation of real and imaginary part, that was your self-study topic, and based on this self-study topic you can expect the problem statements for your innovative examinations. So there could be a problem statement based on this for your innovative examinations, and sample problems of this separation has been already given in the resource book. So you have to refer this exercise of separation with your own. That won't be taught in the class, and we will be directly moving, jumping onto this logarithmic function, and that is the last part of this complex number. And after that there is a concept of sequence and series, and that will complete your module. There is a concept of sequence and series which will complete your module. Okay, so that will take in the second half, because ये logarithmic function जो है इसमें हम basically discuss करेंगे logarithm of complex number, how it is calculated, what are the forms of that, and how it is helpful in solving the problems of complex numbers. So that all we'll see in this next exercise. Fine. So that's it from my side. Anybody wants to say or share something? Any doubt? Any questions on the problems which has been discussed so far?
Yes, any doubt or any questions? And in afternoon, you will be only taking the lecture, right? We'll see. I have one more commitment. If that gets over, then I'll come. Otherwise, somebody else will come. Okay, sir. No issue. Okay. Yeah. How Vivek sir used to share the recording of the lecture? As it is that raw file he used to share, Yeah, ROS file is right. raw file, but where sir used to share? In the GCR. GCR. Yeah. Okay, okay. So I'm not there on GCR. What I'll do, I'll share this recording with Vivek sir. Then Yeah. you can ask him to share it on the okay. Sure, sir. Sir, can you send the written part as well? You send it to Ah. I will share in the class. Yeah. Written part also I'll share. Na? You shared me this one, na? Screenshot you I have shared. shared the attendance to you, sir. Okay, okay. So I replied to that, and there I share this screenshot also. Yeah, This sure, one, sir. Yeah. written part also. Okay. Yeah. Okay, fine. Okay. Welcome. Thank sir. you. Thank you, sir. So if no more doubts, then can we end this meeting? Yeah, sure, sir. Yes, sir. Okay. Sir. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Thank you.